लर्न विद सिद्धार्थ। तो आज जो है हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए इसके 2-3 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिवाइड कर देंगे। तो आज पहले पार्ट्स में हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस of taking by the body. What is nutrition? न्यूट्रिशन मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम खाना खाते हैं और वो खाना पचता है, उसके बाद उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। There are two modes or types of nutrition. They are autotrophic mode and heterotrophic mode. So auto means self. Autotrophic mode of nutrition मतलब self preparation of food। तो सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड इसमें बस आते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो आप कहेंगे कि ह्यूमंस भी खुद से खाना बनाते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स होता है खाना का, पल्सेस, मसालास एंड ऑल द वेजिटेबल दैट कम फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। सो वी डू नॉट प्रोड्यूस फूड, ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स because they produce the food, so they are under autotrophic mode of nutrition. Now heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition means depending on autotrophs for food. Depending on autotrophs for food. Who are autotrophs? The plants are autotrophs because they make food by their own self, so they are autotrophs. And we depend for foods on them, for our raw materials like pulses and vegetables. We get it from the plants, green plants. So humans are best examples. Humans and animals are the best examples of heterotrophic mode of nutrition because we get the raw materials from plants, we prepare the food and then we eat it. So now we will study about photosynthesis.
the picture. Photo here means the light. And synthesis. Synthesis means the process for preparing something. So synthesis means the process of preparing something, and photo means light, and these together makes preparation of food with the help of light. So we will see the definition of photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food. What is photosynthesis? Photosynthesis is the process. Photosynthesis is the process by which the green plants prepare their own food. The food prepared by the green plants are converted into many things that we will know later on. So the process by which green plants, why green plants only prepare their own food? Because of the chlorophyll present in it. Absorb the sunlight. That's why photo means sun. Photo means light. Now we will study the formula for the preparation of food. CO2 means carbon dioxide plus HO2. Not HO2, sorry, H2O. In the presence of sunlight and chlorophyll, they prepare the food. C6H12O6. This is the formula of what? The plants prepare glucose. This is the formula of glucose, just like this is the formula of carbon dioxide, and this is water. This formula. Plus O2 means each also releases oxygen along with glucose. By mixing these three things, these four things together, they even produce oxygen that is released in the atmosphere. Now we will see what is a balanced equation. Balanced equation means the amount present in the left hand side will be equal to the amount present in the right hand side. Now here, this is carbon and this is oxygen. C stands for carbon and O stands for oxygen here. So it shows there is C1 here, but here 6. So here we will write 6CO2. 6CO2 plus 6H2O. H2O means hydrogen are 12 over here and oxygen is 6. So if you want to compare it, we need to make it equal. So it will be 6 into 2 equal to 12. So hydrogen will become automatically 12. Because 6 it will be multiplied with the 2 and 6 into 2 hydrogen will be 12. Then oxygen is 6. So it will be C6 will be the same. C and C6 because 6 is being multiplied and here is nothing under this C, so it will be 1 only.
for hydrogen also we understood. Now we will compare with oxygen. Here oxygen is present in only two oxygen is present over here in the LHS. Here 6 and 2 oxygen are present. In total the oxygen present over here is 8. No. Yes, oxygen present over here is 8. We have put 6 over here. See here, LHS means this particular area. Here there are 6 carbon. This together makes a carbon dioxide, so don't mix it up. C stands for carbon. There will be 6 carbon. So as to make the carbon balance, we have put 6 over this whole equation. So it will be 6 will also be multiplied with 2. So here we will have oxygen will be 6 into 2. 6 into 2 it will become 12. 6 into 1 because here is O and here is this 1. Nothing means 1. So 6 multiplied with 1 it will be 6. So 12 plus 6 because 6 will be multiplied with this 2 also. So it will be 12 plus 6. Equals to 18 oxygen. There will be 18 oxygen. Now hydrogen is the hydrogen will be 12 because 6 and there is 2 under it. So 6 is 12 hydrogen. Hydrogen this side. And now here we will see the RHS, means the right hand side. To make it balance, we need to put 6 over here. See, this 6 plus 6 into 2. 6 over 6 into 2, 12. So this 12 plus this oxygen is 6 over here. So there will be 18 oxygen. See, we make this balance. Carbon is here, this side 6, so here also 6. Carbon 6. Carbon is 6. And then hydrogen. See, hydrogen, under hydrogen there is 12. So hydrogen is 12. So the equation is balanced now, and the balanced equation is now 6 CO2 plus 6 H2O plus CC
requirements for the photosynthesis. Requirements for photosynthesis. The first requirement is what? The carbon dioxide. Also known as CO2. What does carbon dioxide do? The plants take carbon dioxide and release the oxygen. The second requirement is the sunlight. Only due to sunlight, the plants can do photosynthesis. It is the ultimate source of energy absorbed by the chlorophyll present in the plant. The third basic need of the plant is water, better known as H2O. Water is absorbed by roots, and the process of absorbing water by the roots is known as osmosis. The osmosis is the process of absorbing water by the roots. Now the fourth basic need is the chlorophyll. Chlorophyll is a green colored pigment which absorbs the sunlight. Is the chlorophyll. Now, a very interesting thing you can see now, and that is just now I said osmosis. Okay, I will show you what is osmosis. It is the process by which or root absorbs water from the soil. It can be defined as it is a process in which the water
continues from the higher area of water molecules from the higher area of concentration move towards the lower area of concentration. This is the stem. These are the roots of the plant. Now, where is the water available more? In the soil or in the roots? When we pour water, then it goes in the soil. So obviously the soil will have the higher concentration of water, and the roots will have the lower concentration of water. What does the concentration of water mean? The presence of water. Concentration of water means the presence of water. So the roots will have more water or the soil? Obviously the soil will have the more water. So this is osmosis, in which the water goes in the roots of a plant. From the soil, the roots, it is a certain kind of magnetism in which the root attracts the quantity of water towards it. From the higher concentration of water, it attracts towards it. So this is the whole process of osmosis. And now after the water goes in the soil, जब पानी चला जाता है मिट्टी में, तब वो रूट से जाता है, वो स्टेम से होकर लीव्स तक पहुंचता है. तो स्टेम के अंदर there are two conducting tissues, better known as xylem and phloem. What is the work of xylem? It is the helper of roots. It takes the water and minerals from the roots and gives this to the leaves. What does phloem do? This takes the food prepared by the leaves and distributes it to the whole plant. Vascular bundles or tissues. There are two conducting tissues or vascular bundles. One is xylem. It acts like a pipeline between the root and the leaf. Xylem carries the water and minerals from the
the work of distributing the food. It distributes the food which is prepared by the leaf. It distributes the food prepared by the leaf to all the parts of the plant. I think it is clear to you all that क्यों जाइलम और फ्लोएम जरूरी है. अगर जाइलम को हटा दिया जाए, फ्लोएम अपने आप उठ जाएगा, क्योंकि अगर पानी या मिनरल्स नहीं जाएगा ऊपर तो खाना भी नहीं बन पाएगा और जिससे फ्लोएम से किसी को दे भी नहीं पाएगा. तो अगर फ्लोएम हट जाए, जाइलम काम करेगा, वो खाना देगा, लेकिन एक्सेस पानी होने की वजह से बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और खाना भी नहीं बन पाएगा. खाना बन जाएगा लेकिन फ्लोएम उसे किसी को दे नहीं पाएगा, इससे प्लांट मरने लगेगा अगर फ्लोएम हट जाए. So now the next topic is the stomata. The stomata. So what is stomata? Stomata are the tiny openings present in the leaf to exchange gases. ये तो हम सबको पता है कि जो प्लांट वो रेस्पिरेशन भी करता है, इसलिए कहते हैं कि रात को प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे सनलाइट नहीं रहता है, इससे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता और ऑक्सीजन उससे प्रोड्यूस नहीं होता है. वो ऑक्सीजन को और अपने अंदर लेता है रेस्पिरेशन करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है वो ऑक्सीजन के अमाउंट में बहुत कम है. ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दी CO2. O2 is greater than CO2. जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है और रेस्पिरेशन होते रहता है, फिर भी वो बहुत कम ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. ऑक्सीजन भी वो बहुत कम यूज करता है और वो उसको जितना प्रोड्यूस करता है नॉट इवन द हाफ, ऑलमोस्ट 2/5 पार्ट. तो हमने सुना है क्लास 6 में कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है. ट्रांसपिरेशन मतलब अगर हम एक लीफ के ऊपर पॉलीथीन बांध दे टाइट से और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, तो थोड़े बाद डे टाइम में तो थोड़े बाद हमें उसमें वाटर वेपर्स दिखेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे. दैट इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मीन्स द लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर इज आउट ऑफ द प्लांट यूजिंग द स्टोमाटा. और यहाँ लिखा है कि वो गैसेस एक्सचेंज करता है. तो वाटर इज नॉट अ गैस बट इट is a gas when it is converted into water vapor. Water vapor is a gas, so it does not release direct water. In fact, it releases water vapor. That's why it is said that plants only exchange the gases. This is a leaf. There are many stomatas present in it. From
middle part is the stomata, and this is the guard cell present inside of the stomata. Guard cell क्यों रहता है? ताकि स्टोमाटा से कुछ ज्यादा ऑक्सीजन ना अंदर चला जाए या कुछ ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना चला जाए। गार्ड किसकी तरह काम करता है? दरवाजा बंद करने का और दरवाजा खोलने का। जब वो दरवाजा को बंद कर देता है, then the stomata is like this, then the door is closed by the guard cell। और ये ज्यादातर नाइट टाइम में ही होता है। तो ये बीच वाला पार्ट है स्टोमाटा, इसके थ्रू एवरीथिंग गोज इनसाइड। और जो गार्ड सेल होते हैं वो रात के टाइम से बंद कर देते हैं ताकि एक्सेस वाटर वेपर या एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन कुछ भी ज्यादा ना बाहर निकल पाए। थोड़ा ही जितना अमाउंट जरूरी होता है उतना ही निकलता है इससे। That's why the guard cells are present. Many plants such as cactus, have thick green stem for photosynthesis. ताकि ज्यादा पानी, क्योंकि कैक्टस डेजर्ट में रहता है, ताकि ज्यादा पानी कैक्टस से बाहर ना निकल जाए, उसका लीव्स जो स्पाइन्स में कांटों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए कि ताकि वो ज्यादा वाटर वेपर को अपने अंदर से ना निकल पाए, क्योंकि वो डेजर्ट में रहता है, वहाँ पे बहुत कम पानी अवेलेबल रहता है। इसीलिए वो जितना हो सके पानी को सेव करता है। इसीलिए उसके थिक ग्रीन स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि लीव्स स्पाइन्स में बदल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, और अभी आधा चैप्टर बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।